call is now being recorded. Ready? Good evening to all learners again. Very good Good evening, evening sir. to all learners. So, register all learners in message box their name and roll numbers. Registration करते आओ किसी बाकी रह लेनी. So far we have been completed that the subject matter, the typology of voluntary organizations and the taxation problems and etc. So far today we will continue. My voice is clear or not? Clear, sir. Yes, sir. So today we proceed to discuss that problem faced by voluntary organization in rural areas. Rural area रे ग्रामांचल रे कौन सबु voluntary organization को टाइप रो सब problem face करी थांती समस्या देखा जाता है. ज्योतिर्मयी म्यूट करो. ज्योतिर्मयी साहू म्यूट करो. साउंड आउट. ज्योतिर्मय म्यूट करा. So the main aim of this unit is to acquaint. ज्योतिर्मय म्यूट करा. ज्योतिर्मय साहू म्यूट करा. Acquainted with you problem faced by voluntary organizations in rural areas. As we have been already discussed, the problem encountered by voluntary organizations in relating with different sections of rural society and Panchayat Raj institution, which exist as a consequence of the nature and structure of. अरे ज्योतिर्मय टिके म्यूट करा. ज्योतिर्मय साउंड टिके म्यूट करा. ज्योतिर्मय साउंड टिके म्यूट करा. So nature and structure of a rural voluntary organization in regard to registered and non-registered, registered and unregistered voluntary organizations. अनेक voluntary organization अछंती government criteria norms अनुसार. अरे ज्योतिर्मय साहू टिके म्यूट करा. कौन से MRDE रे करूची मुझे बुझी पारु नै. पाठ पढुची ना कोन किछि लिसन करू नै. ज्योतिर्मय साहू टिके म्यूट करा. अन्य लर्नर्स माने डिस्टर्ब होउचंती. So there are multi-faceted problems faced by voluntary organizations functioning in rural areas, because while some problems pertain to the rural social milieu in which grassroots voluntary organizations are operating in rural areas, विभिन्न ग्रामांचल grassroots अति तल स्तर रे काम सब करूचंती voluntary organization गुडिका. There are often problems areas which are to the essential nature of rural voluntary organizations, whether they are registered or unregistered. सरकारी का निकट registration करिचंती किंबा registration करि नाथिन. All are facing problems. So further there are some basic problems which arise from the inadequate internal governance of rural voluntary organizations. So governing body as framed by the voluntary organization in rural areas also for the renewal purposes or membership. In this context, they are also facing the problems. अरे से पिला बिल्कुल ये करू नहीं. कौन करिवो कहलो. ये म्यूट करू नहीं. सुनो नहीं कथाटाकू. So rural society and voluntary organization relational problems. So rural society and voluntary organization सामाजिक ग्रामांचल समाज एवं
volunteer organization रे संपर्कित समस्या गुड़िक कौन खाइपारे so rural social milieu and skewed land relations so कहीं के problem सृष्टि होची rural social milieu or that the structure of the rural area and skewed land relations skewed विभिन्न प्रकार बंटित होइथिबा विभिन्न प्रकार land reform systems is also neglected so that is why some areas in rural areas are clearly attached to with the land reform system and some are not clearly attached or linked with the land reform system केउआडे गांगंडा अंचल रे स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर्स लैंडलेस फार्मर्स एमिति किछि कृषक अछंती आउ किछि अछंती लार्ज स्केल फार्मर्स एंड दी लाइक ट्राइबल्स दलित पीपल आर देयर द कंपोजिशन ऑफ रूरल सोसाइटी इज मार्क्ड बाय स्क्यू विभिन्न आडे विच्छुरित होइछि जो कंपोजिशन गुडिक and land relations and conflict of interest between groups such as landlords conflicts सब देखा जाए अरे ज्योतिर्मयी साउथ के म्यूट करो इला को बिल्कुल सुनो नहीं तो ज्योतिर्मयी साउथ के म्यूट करो so landlords sharecroppers poor artisans landless dalit tribals the composition in rural areas you know but it's more rural society is not having uniform features throughout India भारत रे गोटा यूनिक फीचर समत हार रे वैशिष्ट्य आमे पाइ न थाउ विभिन्न अंचल रे विभिन्न कथा देखा जाय था rather it is marked by stark regional variations आंचलिक भितरे पार्थक्य सब देखा जाय था even has certain advantages as well as disadvantages अनेक आडे बहुत सुविधा सुयोग थिला बेले अनेक आडे बहुत असुविधा मध्य देखा जाय था so village in India vary widely in terms of facilities like road, rail connectivity, irrigation, electricity, education, health, provisions. से पिला कोन सुनो नै म त एते कथा कहूची से पिला को सुनो So classroom RC book can either switch mute him or may remove. Oye, así ni el con. De ऑफिस de पटेले प्रोफाइल करे से पिला बंद करनी काहे कि जते मई साउ हेलो कौन करबा ध्वनिता से तो डिस्टर्ब कलानी बड़ सो ताकू रिमूव कर दियंतु सर बहुत डिस्टर्ब हो जे ताकू रिमूव कर दियंतु से आउट जॉइनिंग हेले कहबे से कबिला लोग से सुनोनी पिलाले रकम होची क्लास अटेंड करूनी ताकू रिमूव कर दियंतु रिमूव करले से क्लास में करूना मते से कोन से रेस्पोंड करू नहीं बिल्कुल से सुनो ही नहीं क्लास सुनो ही ना हेलो चंदन चंदन ताकू रिमूव कर देने चंदन भाई प्लीज रिमूव हर रिमूव कर दे हेलो लिसन yes sir so that in the absence of land reforms and land relations are skewed in most part of the rural India rural society is dominated by medium large scale landlords मध्यमित एवं भूमिहीन श्रमिक एई भली सब विभिन्न प्रकार कोआडे भलो कनेक्टिविटी अछि लैंड इलेक्ट्रिसिटी रेल रोड बस बहुत आडे मध्य बहुत सुविधा सुयोग थाए तो एई भली सब विभिन्न प्रकार disparities are there in rural India so panchayat raj institutions and voluntary organizations now we proceed to discuss how panchayat raj institution cordially coordinate cooperate with the voluntary organization and simultaneously voluntary organization also cooperate coordinate to the panchayat raj institution or we can say jila parishad प्रति district रे गोटे लखा थाए the jila parishad or panchayat raj institutions
formulate, implement, plan, take strategy for the development of the rural area, particularly through block, panchayat samiti system, decentralization of administration system ta kuha jaye, decentralization of bureaucratic system of administration. So panchayat raj, there are 3 tiers of political system in our country. The Constitution 73 or 73rd Amendment Act during 1992 is a fundamental jinsa gudago, and the subsequent provision of the Panchayat Raj Extension of Scheduled Areas Act 1996 so furnished the ground for states to enact confirmatory laws for the establishment of the Panchayat Raj institution with enhanced power and responsibility. Panchayat Raj को 1992 Act अनुसार ताकू empowered करा गला for the development of the rural villages and block areas. मु कहितली भारत रे पंचायत राज प्रथमे को स्टेट रे कार्यकारी हेतला मन अछि ना आगुर मु कहितली तरे विभिन्न प्रकार परीक्षा रे आसे सिविल सर्विस परीक्षा विभिन्न बैंकिंग परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन आसे इन राजस्थान मन रखता भूली जीवनी कौन करिवनी राजस्थान. So Panchayat Raj first introduced in Rajasthan. So as these include transfer of funds and various functions earlier control exercised by the functionaries of the institution of state engaged in rural development. विभिन्न प्रकार अनुष्ठान सरकारी अनुष्ठान गुडी का आगे एगुडा सब कंट्रोल करूथिला फाइनेंस एंड प्लानिंग एटसेट्रा. सो व्हेन जेतल पंचायत राज गठन हो गला 1992 एक्ट अनुसार so that decentralized the planning system and development for the rural village and panchayat samiti areas, giving priority to implement plan and take strategy for the development of the rural areas. The Jilla Parishad are required under the constitution to prepare district plan. So Jilla Parishad जोगुडा elected member जो माने लोकमा प्रतिनिधि माने जिला परिषद रो लोक प्रतिनिधि माने से माने इलेक्टेड मेंबर सब थांती. पंचायत समिति रे से भली पंचायत समिति कोड थाए ना हमर ब्लॉक लेवल ले पंचायत समिति, विलेज लेवल ले थाए ग्राम पंचायत, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज सिस्टम. तनो एथरे सब गुडा कोची इलेक्टेड मेंबर. द एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव जे हेड होची कलेक्टर जिलापाल ता कोंती से प्लान फॉर्मुलेट करे इम्प्लीमेंट करे एक्सरसाइज प्लान टा एग्जीक्यूट करि थांती किए ना कलेक्टर करि थांती. जोडा जिला परिषद रे पास होई थाए इलेक्टेड मेंबर मानक द्वारा ताकू एग्जीक्यूट करा जाई थाए प्रशासनिक कळ रे ताकू कलेक्टर करि थांती विभिन्न अंचल रो उन्नयनमूलक जिल्ला रो उन्नयनमूलक कार्यक्रम पई. सो सेति पई पंचायत राज माध्यम रे the numbers of voluntary organization are also exist and provide facilities to the voluntary organization. Voluntary organization also helps cooperate to Panchayat Raj system, and banking sector also coordinate to this Panchayat Raj institutions, provide facilities for keeping, for cow rearing, go palana pai, एवं डक्केरी चाष पाई एवं अन्यान्य गोटेरी कुकुड़ा फार्म करिबा एगडा सब पंचायत राज अनुष्ठान माध्यम रे बैंक फाइनेंस करि थाए एवं ट्रेनिंग सेंटर दिया जाय थाए थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. बोथ पंचायत एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इंप्लीमेंट such rural development projects as are aimed to improve the social and economic conditions of the rural people. सामाजिक अर्थनैतिक मानदंड को दृढ़ करिबा पई ए परस्पर मध्य रे बुझाबणा बा कोऑपरेशन करी डेवलपमेंट ग्रामांचल रे करा जाय थाए. Since their roles have turned out to be complementary in nature, the issue pertaining to coordination of the work of a voluntary organization and panchayats have acquired a critical significance in the context of the rural development. Theoretically speaking, there are no contradictions in the roles of functions of Panchayat Raj institution and voluntary organizations in regard to rural development because कोडी नॉन कोऑपरेशन देखिबा पई मिली न थाए. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एवं पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बोथ cordially tremendously
cooperate to each other. In the context, the work of voluntary organization is additive in the sense that funds they invest supplement and the development activities of Panchayat Raj institution. Panchayat Raj कौन करे? Voluntary organization funds investment करे बेले बेले एवं पंचायत राज अनुष्ठान मध्य funds investment करे for the rural development. There is no scope of conflict in regard to jurisdiction, since Panchayat Raj institutions are always kept informed funding agency about project sanction to voluntary organization. विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन माध्यम रे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाय थाए कर्म जो गुडा का सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पाई पंचायत राज बीइंग इलेक्टेड एंड पॉलिटिकल लीगल एंटिटीज may not be able to attend certain developmental tasks which are best done by voluntary organization, instant family welfare, child development. Panchayat Raj dehetu oda elected governing body members. Panchayat Raj oda elected body directly elected by the adult franchise. Sabalaka vote प्रथा द्वारा सेमान सब इलेक्शन आइथांती मेंबर माने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तेणु सब बेले सेमाने समय देई पारि नथान तेणु जो फंड्स आसिला ताकू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को दायित्व दिया जाय थाए सोशल वेलफेयर काम करिबा पई फैमिली वेलफेयर काम करिबा पई इम्यूनाइजेशन करिबा पई देश रे सो एई भली ताकू हैंड ओवर कर दे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को सो पंचायत राज बीइंग इलेक्टेड पॉलिटिको so voluntary organization NGO have been found useful in training functionaries of Panchayat Raj institution and creating awareness among women and weaker sections महिला एवं सशस्त्रीकरण एवं दुर्बल श्रेणी सेक्शन लोक मानकर सब अवेयरनेस क्रिएट करि थांती कोन सब फैसिलिटी सरकार दउचंती को क्षेत्र रे ट्रेनिंग दिया जाउची कोन सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा जाय परिबो विभिन्न प्रकार अवेयरनेस क्रिएट करि थांती वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माने so voluntary organizations and NGOs has been successful in specialized grassroots level intervention formation of self help group SSG जो गुडा कहा जाए so पंचायत राज इंस्टीट्यूशन माध्यम रे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सहायता रे SSG मान सबु को क्रिएट करिया पई बा गठन करिवा पई सृष्टि करिवा पई सब सहायता करा जाय था प्रॉब्लम फेस्ड बाय वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरिया कौन सो प्रॉब्लम बिकॉज़ देयर आर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरिया हम जानछन ग्रामांचल ग्रासरूट लेवल ले किछि रजिस्टर्ड अछंती किछि अनरजिस्टर्ड अछंती सरकारी नियम कानून अनुसार किछि रजिस्ट्रेशन करि थांती छोट छोट आउर बहुत छोट छोट ऑर्गेनाइजेशन से लोकल एरिया लोक मानको नेगिरी अनरजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मध्ये अनेक गड़ी उठी तेणु ये सब प्रॉब्लम फेस करे जाए से फेस करी थांती कौन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन रूरल एरियाज इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सच वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एज आर सिंसियरली विशिंग टू सर्व द पुअर गरीब लोक मानकू सर्विस दबा पई से माने विभिन्न प्रकार सोशल इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सो फेस करी थांती so the prime task of a volunteer organization and NGOs is to organize the poor disadvantaged sections dalit women and the like in rural communities ei manaka kshetra re dalit ebong disadvantaged sections unprivileged sections poor women ei manaka kshetra re bishesh kari voluntary ba NGO mane sub kamo kari thanti so make them aware of their rights and entitlement inherent in various rural development schemes and to help them raise their voice in different forums like in panchayat re sabu semane tankar voice tankar swadhina chetana उत्थापन करिबा पई सचेतनता सिखा जाय थाय सेमानकु so the majority of the rural poor belong to scheduled tribe, scheduled caste people who are mostly agricultural laborers, so you know, or poor to poor belongs to scheduled caste, scheduled tribe, or artisan guru. हमें माने जानि जंती गांगंडा अंचल रे विशेष करी लैंडलेस लेबरर्स आर्टिसान्स
आम कहबा हम देश रे को मान एक्चुअली पुअर लैंडलेस लेबर स्मॉल फार्मर्स आर्टिसान्स यही कैटेगरी लोक माने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यही कैटेगरी लोक माने प्रकृत रे दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करती दोज आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन सो सेमानकर उत्थापन सैथान करबा पई सेमानकर अवेयरनेस क्रिएट करबा पई volunteer organization come forward and help them create awareness among themselves. The local panchayat and gram sabha are deeply politicized as the election are contested on party or caste line. So therefore the leadership of panchayat raj institution is largely in the hands of the landed gentry, the poor, especially the marginalized sections have little effective voice power in panchayat raj institution. So marginal जो माने marginal farmers and marginal workers, they have no voice to raise their they have right to raise their voice in front of the panchayat samiti and panchayat raj. So the volunteer organization help to cooperate with them and create awareness among these categories of people to raise their voice in front of the panchayat raj institution and panchayat about the facilities as provided are sanctioned during different time to time for the people. So in such a situation, volunteer organization and NGO which genuinely strive for the upliftment of the poor, women and disadvantaged sections, many a times local rural people are instigated on the basis of false emotive, cultural and religious issues against volunteer organization and NGO. बेले बेले कौन है volunteer organization NGO विरुद्ध रे मध्य लोक मानन को false statement देकी तांका विरुद्ध रे स्वर तोलन करि था NGO विरुद्ध रे हे से काम करूनी से false रे बिल भाउचर करिने जाउची कोन से सोशल एक्टिविटी करूनी ए बल से विभिन्न प्रकार सब देखा जाय था ग्रामांचल मानकरे से माने समाज रे कौन साहाय्य करिवे को भली करूचंती बा न करूचंती ए गुडे सब समालोचना मध्ये फेस करिथांती फील्ड वर्कर्स एंड टाउन बेस्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन एडिंग द इनिशियल कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ विलेजर्स इन टेकिंग अप एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज इन रूरल कम्युनिटी फर्स्ट जे तळे गोटे एनजीओ टाउन बेस्ड विलेज जो गुडा टाउन बेस्ड माने टाउन पाखा पाखी जो अंचल मानकरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ माने प्रथम एंट्री करी थांती सेमान पई ट्रस्ट क्रिएट करबा पई डिफिकल्ट रहता है लोक मानक मध्य गांगंडा लोक मानक भीतर अनेक क्रिटिसिज्म सेमान फेस करी थांती हे आसिला एनजीओ संस्था हमको समको ए माने खाली फाइनेंस अर्थ हड़प करिवे लूट करिवे कोन सोशल एक्टिविटीज करा जीवन एई भली सब समालोचना फेस करन प्रथमे volunteer organization बा एनजीओ मानको ट्रस्ट क्रिएट करिया पड़ो लोक मानक भीतर ट्रस्ट केते बेला हो when केते से लीड करिवो पीपल को when the volunteer organization and the NGO will touches the heart of each people in the area केमती by sacrificing their labor and time towards the village people जोटारे वास्तव रे सरकार दउचंती जो वेलफेयर एक्टिविटी सैंक्शन करछन प्रकृत रे करी कि जदी देखै दबा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बा एनजीओ मानक तरफ ताले दैट एनजीओ विल बिकम ए लीडर बिकॉज़ ए लीडर ऑलवेज लीड्स द पीपल अदरवाइज ही विल बिकम ए लैडर जदी लीडर जने न होई परला वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रे ऑटोमेटिकली लोक ताको कहबे लैडर आ कोन लोक ता ऊपर चढ़ी जिवे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बा एनजीओ ऊपर लोक सरो तोलन करिवे so he'll turn to become a ladder जदि volunteer organization गोटा लीडर होवा पई चाहे so he should leads the people प्रकृत रे लोक मानकर सेवा करिके देखाई देबार अछि so he can touch the NGO volunteer organization can touches the hearts of all the people in the local area or rural area so he will become a leader in NGO sector there always exists in possibility that powerful representatives of existing leadership may get antagonists and to the extent of obstructing work such as volunteer organization, field workers of volunteer organization or NGO
require enormous tact, skill, and empathy while approaching rural communities. Jete rural community thae, tankur approaching method re to apply the people skill, people skill, loko kaushala, बुद्धि विद्या अप्लाई करबा में पड़ी थाए अनेक लोक विमुख होई थांती विभिन्न प्रकार नुआ बेनिफिट अटैचमेंट हवा में विश्वास करि न थांती तेनु करी हम कोन करेबा पीपल स्किल अप्लाई करेबा पड़िबो पॉजिटिव ओनली गोटा विराट पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको सृष्टि करबा में पड़ी था so जदी वंस पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हे गला ऑन द फीचर्स ऑफ द volunteer organization or NGOs, then that NGO will lead the people and become the leader of the social organization. Social organization सामाजिक सेवा क्षेत्र रे से गोटा लीडिंग रोल करिवो. So in this regard, the following grounds rules may be observed by consensus. Volunteer organization NGO must avoid any duplication. So thare duplication हे गले negative environment spread हे जीवो in rural area. कारण गाँ गंडा लोक माने अधिक होचंती सुपरस्टिशन अंधविश्वास एवं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पर बेसी फोकस करी थांती कारण बिकॉज़ मैक्सिमम पीपल आर इलिटरेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पीपल एंड स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स आर्टिसंस बेसिकली ऑब्वियसली दे आर इलिटरेट सो सेमान को हार्ट टच करबा पे पड़ो अवॉइड द डुप्लीकेशन प्रकृत ट्रुथ पाखर नहीं पहुंचाबा में पड़ो ए पंचायत लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी में भी फॉर्म्ड हैविंग ब्रॉड रिप्रेजेंटेशंस गोटा पंचायत कोऑर्डिनेशन लोकन को नहीं करी लोक मान का भितरु किछि लीडर नहीं करी तांको तागरे मेंबरशिप इन्वॉल्व करबा पे पड़ो गां गंडा अंचल लोक मान को नहीं करी तांको मध्य मेंबरशिप रे इन्वॉल्व करबा पे पड़ो सो ट्रस्ट आसी पहुंची जो से मान का So next, the coordination committee must ensure that there is no conflict among voluntary organization NGOs with the local people. There must not exist any conflicts. We should avoid the conflict. The institutional funding agency, especially state funding agency, must ensure the necessary coordination established in the field of effective functioning of voluntary organization and NGO. State coordination जो फंड सब आसुची वास्तव भाव से गुड़िक जो मेंबर थे मध्य से गुड़िक सब सूची देवा पड़ो जी फंड्स आसला ये अनुसार बजेट है इत्यादि इत्यादि सो एन adequate mechanism must be put in place of ensuring the proper utilization of financial resources. Adequate ensuring mechanism must be created. So जी फंड्स आसला proper utilization ताकू मध्य ध्यान देवा उचित otherwise there may be distrust will prevail. So nature of rural volunteer organization and consequent problems कौन सो nature and कौ भली सो problem so सृष्टि हेता like there are large number of small informal and unregistered voluntary association groups operating in rural areas ये भली सो विभिन्न प्रकार volunteer organization rural area re sabu operate karuchi. There are usually formed when a group of people having some common interest voluntarily come together and agree to act in order to achieve some sort of goals. किछि unregistered member माने एकाठी हे जानती युवक माने एकाठी हे जानती कोन गोटा निर्दिष्ट काम करिवा पई से माने चेष्टा करि थांती. Such societies are group functioning as small diffuse organization based on the informal relation among their members rural communities. से rural community माध्यम सब गठन होता है. Most of these cultural religious societies like recreational societies, sports and association clubs, office holders ये बड़ी सब गाँव गंडा अंचल देखा जाए. So they understand the main characteristics of such volunteer organization are a very limited area of coverage. ये जो छोटे छोटे एनजीओ सब थांती volunteer organization गाँ गंडा अंचल सब कम्युनिटी सृष्टि होता है से माने लिमिटेड एरिया रे काम करी थांती ए लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज से माने एक्टिविटी गोटा लिमिटेड रेंज भीतर थाए कल्चरल भीतर थाउ बा कम्युनिटी फंक्शंस थाउ रिलीजियस सेरेमनी हो ये छोटे छोटे जिंस पर से माने
8-10 जन एकाठी हो गले गला एगुड़ा सब एक्टिवेट कले गाँ गाँ अंचल लिमिटेड कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप मत मेंबरशिप गोटे निर्दिष्ट कम्युनिटी भितर बा जाति संप्रदाय भितर सेगुड़ा मत सृष्टि होता है सो इन केस ऑफ एसएसजी ग्रुप only like-minded persons came together pursuit mutual benefit of only usually nominate leader जोड़ा एसएसजी अच्छी से माने मध्य तांका मेंबरशिप की नॉमिनेट करी थांती रूरल एरिया रे so the office bearers are volunteers and usually render honorary service and no get any salary जो माने ऑफिस सब काम बा इन्वॉल्व थांती मेंबर माने कौन से माने सैलरी नहीं न था अनरेजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कौन सब प्रॉब्लम सब देखा जाता है द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ अनरेजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन they vary to the extent that it may not lead to any generalization however they lack expertise in modern principle of management कारण समान सब अनरेजिस्टर्ड गुड़िक ट्रेनिंग नहीं न थांती अनरेजिस्टर्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एवं सेमानकर मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक जानि न थांती केमिति मैनेजमेंट माने को जगह रे कोन काम करले लोकंकर प्रतिभाजन होई परिबो समाजर मंगल होई परिबो सेमानकु विद्या मालूम न थाए जोडा का अनरेजिस्टर्ड कारण अनरेजिस्टर्ड माने सरकार तांकु कोन से ट्रेनिंग दबो नाही because they are not abided by the rule and regulation of the NGO or non-governmental organization. They do not have requisite competence to perform higher and complex organization responsibility. बड़ा बड़ा organization जो वाली responsibility नहीं काम करते एमान unregistered छोटे छोटे गुड़ाक काम करी पार न था. They lack knowledge pertaining to legal companies, institution. Thus, the major problems on registered volunteer organizations, their lack of capacity and consequently capacity building, they are facing the various numerous problems in rural area. So, ये point of view से माने unregistered volunteer organization NGO गुड़ी को बहुत problem face करी था. So, registered local voluntary organization कौन? A society under the Society Act of 1860. 1860 Act अनुसार से माने सबू registered होती है. A trust under the Indian Trust Act of 1882 and other related acts must be followed. जोड़ा सबू registered voluntary organization. A non-profit company under Section 25, the Company Act 1956. 1956 अनुसार Company Act अनुसार non-profit company सबू बहुत थांती जो माने कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटी रे विभिन्न प्रकार गुड्स कमोडिटी मध्य प्रोडक्शन करी थांती. द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इज द simplest to operate and has been adopted voluntary organization in rural areas. It may be noted that here are not considered village cooperative farming, credit societies and other such cooperative societies as voluntary organization in the analysis. So that is why the cooperative society हो बा अन्यान्य बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सब रजिस्टर्ड ही थांती सोशल एक्ट अनुसार 1860 अनुसार. It has been that over 90% of the registered voluntary organizations in the rural areas have been constituted under the Society Registration Act 1860. About 90% voluntary organization madhya 1860 Act अनुसार registration होई थांती. They are abided by the rules and regulation norms and conditions of the 1860 Act. This seems to be the most preferred organizational model for a voluntary organization. The reason being that the procedure involved this act is simple. A minimum of 7 persons can form a voluntary organization. Minimum 7 जन दरकार होई थांती. ओरा voluntary organization जदी registration करिया पय हेले ताल तार होचंदी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर्स ए माने सब तांकर गवर्निंग बोर्ड सब थांती. सो प्रॉब्लम कोन रजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मध्य अनेक समय प्रॉब्लम फेस करी थांती. So what are the problems? Voluntary organization by and large do not experience any difficulty in meeting above mentioned requirements. बेले बेले due to lack of training member माने ठीक भाବରେ ट्रेनिंग न नै थिले they unable to handle the people in the rural area. Tactfully they cannot able to handle.
So due to lack of training facilities, training होची मुख्य जिनस जहा परे को हिसाब रे लोक मानकू हैंडल करि परिबे लोकन को सुहाइला भली पब्लिक एक्टिविटी करि परिबे जदि पब्लिक सोशल वेलफेयर न होला ऑटोमेटिकली दे विल क्रिटिसाइज दे विल क्रिएट डिस्ट्रस्ट अविश्वास सृष्टि करिबे इन रूरल एरियाज ए टिपिकल problematic area pertains to the renewal of the registration second important problem face करि थांती बहुत registered NGO and social organization volunteer organization माने renewal पाई so renewal क्षेत्र रे बहुत से माने प्रति वर्ष थरे लेखा renewal करि थांती से मान सब NGO volunteer organization माने सेति में तांको अनेक दौड़ीबा पई पड़ी थाए जो सेक्टर से माने काम करू थांती ऑफिशियल प्रोसीजर रे विभिन्न कारण ब्यूरोक्रेट सिस्टम रे समान को फाइल मूवमेंट करिक रजिस्ट्रेशन करिया पे रिन्यूअल करा जायता तनो एगुडी के सब मध्य एडा सब फेस करि थांते वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माने सो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फेस डिफिकल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रेटन्स द फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली मध्य दे आर थ्रेटेन्ड तमे ठीक भाबरे काम करनो तमे ए करनो रिन्यूअल बंद कर दिया जिवो इत्यादि इत्यादि सो they will demotivate automatically. The registered volunteer organization automatically demotivated. In regard to volunteer organization which have more members than just the board members, the situation is again peculiar. जोटी बहु परिमाण रे मेंबर थाती सेठी मध्य सिचुएशन बड़ा पिकुलियर थाए कारण समस्त की कंट्रोल करा जाई पारि न थाए सो नेक्स्ट जिबा में the rural volunteer organization internal governance को मान सब थांती governing body रे सब provide policy the main function of the board and executive committee रे कौन सब function सब अछि provide policy program support in vision goal of the volunteer organization secondly ensure program implementation financial and personal management third maintain transparency स्वच्छ एवं अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी ए गुडी को सब मेंटेन करबा दरकार द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कमिटी एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी स्वच्छ निर्मल भावमूर्ति सब मेंटेन करबा डेवलप ए स्ट्रेटजी विजन कैपेसिटी ऑफ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सब बेले ध्यान देबा उचित safeguard the autonomy of voluntary organization autonomy की मध्य सेफ्टी रे रखिबा उचित ensure adequate availability of funds सब बेले ए कमिटी गुडी का प्रचुर फंड्स नले से माने सब रन करि परिबेनी सो फंड्स प्रति मध्य ध्यान देबा दरकार सो आउ कोन द मेन रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी जो मान सब सेक्रेटरी थांती संपादक कार्यक्रम करि थांती सेक्रेटरी रहउछंती मुख्य जे प्रैक्टिकली जे काम करि थांती बा जहां का माध्यम रे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बा एनजीओ गुडी को रन करि थाए सो प्रेसिडेंट होछंती एक्स ऑफिशियो बॉडी हेड ऑफ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बट सेक्रेटरी एक्चुअली practically he runs the activities of the volunteer organization so what is the main role of or responsibility of the secretary of a volunteer organization ensure that the volunteer organization meets its legal obligation आइन भितरे रही करी काम करूची ना नाही volunteer organization ताको secretary कर दायित्व गुरु दायित्व arrange board meeting in order to transact business of the volunteer organization board meeting मझिरे मझिरे सबले कंडक्ट करूथवा दरकार मेंबर मानकु नै करी make all arrangement for the annual general meeting वार्षिक गोटा annual general meeting रेडी करबा दरकार सरकारी ऑफिशियल लोक मानकु किछि आनिबा दरकार इनवाइट करबा दरकार विभिन्न लोकल मेंबर मानकु डाकिबा उचित ए गुडी सब सर्कुलेट द मिनिट्स फॉर नेसेसरी एक्शंस प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश करबा दरकार या काम होइथला दायित्व दे जाइथला हमें ए काम सब कंप्लीट करी एनुअल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल तो मेन रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द ट्रेजरर सेबल ट्रेजर मानकर जो माने ट्रेजरर अछंती तांकर मध्य दायित्व अछि किछि सो समानकर दायित्व कोन एन्श्योर प्रॉपर सिस्टम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजेट सो फाइनेंशियल कांसेप्ट बजेट प्रिपरेशन करिबा
keep all board members informed about the financial status conditions. सबु मेंबर मान को फाइनेंशियल स्टेटस विषय रे जानवा उचित. Exercise control over the finance of the volunteer organization. Finance control treasurer कर दरकार. Make appointment of the auditors. Auditor मान प्रति वर्ष ऑडिट करबा दरकार. फंड्स केते आसिला ठीक भाबरे सेगडा स्पेंड हेछि कि नाही किबा कोठी मिस मैनेजमेंट हेछि जो फंड्स गडा को तेणु सेगडा सब ऑडिट एनुअली हवा दरकार. एडा ट्रेजरर दायित्व. arrange audit accounts and volunteer organization so that maintenance of account in a volunteer organization. Cash book कौन सो maintenance रहिबा दरकार. cash book तापरे बैंक पासबुक, register of payment voucher, a register of receipt voucher, a register asset to both movable and immovable property. गोटा लगा register सब maintain करबा दरकार volunteer organization बाबत. केते मटेरियल अछि, केते मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अछि, रजिस्टर गोटा मेंटेन करिया दरकार. रिसिप्ट ऑफ वाउचर्स, रजिस्टर पेमेंट वाउचर जाक जाक सब पेमेंट करा जाउची एंड सब ऑडिट पई सब दरकार होई थाए. रिकॉर्ड ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जाक सब ऑथराइजेशन दिया जाउची एक्सपेंडिचर पई तांको सेगडा सब मेंटेन करिबा दरकार. नेक्स्ट होची इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. volunteer organization मानकर मध्य इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सब फेस करि थांती. सो कोन इनकम टैक्स एक्ट अनुसार किभली से मान सब मेंटेन करबा दरकार. द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय volunteer organization कारण इनकम टैक्स जोठी अर्थ कारबार हला where there is money circulates or transaction is held so that income tax always focuses on that particular institution. इनकम टैक्स सेठी फोकस करिवो. सो काले कोटी कोटी टंकार फंड्स आसुची कोन करूची इनकम टैक्स नोटिस मध्ये आसी पारे. तापरे तार बाट अछि इनकम टैक्स डिडक्ट न होई न थाए. सो द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द volunteer organization pertains to mandatory compliance under the Income Tax Act 1961. सबु व्यक्ति इनकम टैक्स जो माने जॉब होल्डर जॉब रे अछंती बिजनेसमैन माने समस्त जोटी फाइनेंस सर्कुलेशन होउची बजेट जो प्रिपेयर होउची सो दे शुड फॉलो अबाइड बाय द रूल ऑफ इनकम टैक्स 1961. 1961 एक्ट अनुसार समस्त से रूल को बाध्य मानिबा पई. सो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड are common to all the volunteer organization, especially the volunteer organization receive funds from the government, foreign and domestic institutional agency. So income tax act 1961 अनुसार foreign aid रू केते रिसीव करूची एवं कोन करूची सेंट्रल गवर्नमेंट रू केते रिसीव करूची स्टेट गवर्नमेंट रू केते रिसीव करूची एवं इंडिविजुअल कंसम केते रिसीव करूची अन्य फंड्स कोड सब आसुची. ये सबु इनकम टैक्स 1960 एक्ट अनुसार से गुडी को सबु फॉलो करिवा उचित. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न. फाइल करिवा पे बाध्य एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न ता जे नील स्टेटमेंट देखि परिबे जे एतिकी आसिला सोशल वेलफेयर रे एतिकी खर्च होला तेणु एनुअल रिटर्न गोटा देखैबे. सो जीरो रिटर्न सरकार को न दे पारंती कारण जहाँ आसिला सोशल वेलफेयर एक्टिविटी रे खर्च होला. जेतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अछि से माने बाध्य फाइल रिटर्न करके देखेबा पई तांकर सोर्स केते आस्तला कोठु केते सोर्स आसिला को हेड रे एक्सपेंडिचर हला सेटा वेरीफाई करिवो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. काले फ्रॉड हे गला मिसमैनेजमेंट हे गला फंड्स गुडी को तेणु नीट क्लीन ट्रांसपेरेंसी रहबा पई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मस्ट करबा दरकार. दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग ए परमानेंट अकाउंट नंबर गोटा पान नंबर बाहर करबा दरकार. परमानेंट अकाउंट नंबर तक जाय पान नंबर. टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस फाइलिंग ऑफ एनुअल टैक्स रिटर्न वर्षिकिया टैक्स रिटर्न फाइल करबा दरकार. इवन if the volunteer organization does not have any taxable income to show a nil return is to be
filed annually. जो कौन सी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जदि इनकम टैक्स नहीं दबार तेणु नील स्टेटमेंट मध्य सरकार को शो कर इनकम टैक्स को शो करिवो जे मोर कौन सी सरप्लस इनकम नहीं बजेट आस्तला फंड सेति अलॉटमेंट आस्तला एवं आमे ए हेडर सब खर्च करलु सो नील हेले भी जीरो हेले भी ताकू इनकम टैक्स फंड रे शो करिबा पई पड़ी थाए कारण कैश ट्रांजैक्शन कारबार होची इनकम टैक्स रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड बाय वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर at the state level with the charity commission or register of societies as the case may be जोटी ट्रस्ट थाए चैरिटेबल ट्रस्ट थाए बा कमिशनर ट्रस्ट थाए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मान करे समस्त शो करिया बाध्य द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 is a legislation of central government which affects all voluntary organization NGO trust society and the like informally throughout the country सारा देश पई एगुडिक इज इनकम टैक्स 1961 एक्ट समस्त पई प्रযোज्य जेते हम देश रे जोठी बजेट कारबार बा अर्थ कारबार होची से जने चाकरिया व्यक्ति हो जॉब करि थाओ बा बिजनेस करि थाओ बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थाओ किंतु किए सेठी दौची जार इनकम सरकार गोटा स्लैब करछन 5 लाख ऊर्ध्व हेले ताले से माने को हे 5 लाख बिलो हेले इनकम टैक्स पड़िबो नाही वर्तमान सरकार नीति अछि 5 लाख बिलो हेले जार इनकम एनुअली 5 लाख एबव हेले ताल तांकु शो करिबा पय पड़िबो इनकम टैक्स एनुअली तेणु सेठी कोन करिवे ए माने नील रिटर्न मध्ये देखाई परिबे कारण 5 लाख ऊर्ध्व जदि 10 लाख 15 लाख खर्च करिसेंती ताले से माने नील रिटर्न देखिबे कारण सोशल एक्टिविटी रे से माने डिस्बर्स करछन दे आर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट सोशल हेड्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पीपल इट इज नेसेसरी टू गेट a register under the income tax act since it may bring them under the scan of income tax authorities thus a large number of volunteer organizations functioning in rural areas are caught in a dilemma that if they come forward for registration under the income tax act their accumulated funds will be taxed so बहुत volunteer organization गांग अंचल रे रूरल अंचल सब अछंती they are in a dilemma whether they will register in front of the income tax whether they will file the income tax they do not know अनेक ignorant मध्ये अछंती यदि income tax file न करिवे ताहाले they may be punished by the income tax department automatically कारण norms conditions जा अछि सरकार का most among them in rural areas lack of knowledge awareness and competence in completing the intricate formalities filing of forms and other papers work involved and simply find inconvenient to remain away from the scrutiny of income tax authorities so अनेक कोन करि थांती इनकम टैक्स रु बंचिबा पई से माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किछि शो करि न थांती so that will create problem for the volunteer organization so maintenance of accounts in voluntary organization that we discussed besides this that the understand role of the chief executive जे volunteer organization chief executive थांती तांकर सब कोन विभिन्न प्रकार रोल अछि review the vision mission and goals of the volunteer organization जे chief executive थांती से सब बेले रिव्यू करूथिबा दरकार कार्यक्रम विजन कोन अछि मिशन कोन अछि हमर गोल कोन अछि volunteer organization कोन सब करा जायछि एवं आगु को हमें कोन विजन रखिछ then the volunteer organization become a leader in social organization समाज सेवा क्षेत्र रे यदि एई बळी प्रिपरेशन करा जाय ताले that volunteer organization will become a leader and leads in a rural area people otherwise he will turn back to the ladder माने सीढ़ी ऊपर लोक चढ़ी गला भलिया से volunteer organization लोक माने सब चढ़ी जिवे ताको नाना उत्साहटना कमेंट सहिबा पय पड़िबो so second होची guide and support the secretary and treasurer chief executive कोन करिवो secretary एवं treasurer को गाइड करबा उचित ठीक भाबरे खर्च होची ना नाही
सेक्रेटरी महाशय ठीक भाव में सबु कार्य को सुचारूपे करिपरछन नाही इत्यादि। सो असिस्ट द बोर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सबु बोर्ड रो मेंबर मानन को मध्य असिस्ट करबा दरकार के चीफ एग्जीक्यूटिव विभिन्न समय रे सब मीटिंग अरेंजमेंट करबा दरकार से मानन को अवेयरनेस दबा दरकार ए कार्य आगु को विजन अछि मिशन अछि इत्यादि। एस्टैब्लिश लिंक विथ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स विभिन्न प्रकार लिंक सब वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एम्स को सब एस्टैब्लिश करबा दरकार लिंक का सहित सरकार के सहित एवं सोसाइटी सहित से जस्ट ए मिडिल मैन इन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विथ द पीपल and mediator just volunteer organization just the mediator because funds are collected from the government sector and that dispersed and distributed in different social heads social welfare activities. Raise the professional capacity of the staff working with the volunteer organization विभिन्न प्रकार professional skill having knowledge efficiency ये सब मेंबर मानन को voluntarily the volunteer organization must enter into the board board रे बहुत प्रकार एफिशिएंट लोक मान को स्किल थिबा नॉलेज थिबा ज्ञानधारी लोक मान को मध्य सेठी एंट्री करबा दरकार। अरेंज प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग एंड स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ वॉलंटियर मेंबर्स इन द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सब बेले मीटिंग अरेंजमेंट करबा दरकार। ट्रेनिंग इन सोशल मोबिलाइजेशन ऊपर ट्रेनिंग दबा दरकार। चीफ एग्जीक्यूटिव एटा होची दायित्व ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव से मध्य मध्य ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करबा कथा एवं अन्य स्किल नॉलेज सब विभिन्न वर्ल्ड रो सब विभिन्न प्रकार नॉलेज सब कलेक्शन करबा थ्रू मैगजीन एंड पेपर्स थ्रू मीडिया थ्रू इंटरनेट फैसिलिटीज को देश रे को भली सब सोशल वर्कर बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की भली सब काम करूची फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर बा प्राकृतिक विपाकरे दुर्विपाकरे किभली सब लोक को सहायता करा थाए बन्या बात्या मरुड़ी ये समय किभली जीवन को उत्सर्ग करी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर माने किभली लोकन को थैथान करि थान सेति पय ट्रेनिंग स्किल नॉलेज सब लर्न करबा दरकार। सो बिल्ड ए फेवरेबल इमेज ऑफ द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द रूरल सोसाइटी एंड मीडिया गणमाध्यम कारण गणमाध्यम गोटा अंचल गोटे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट अचीवमेंट करबा पय देई थाए। गणमाध्यम रे जेते प्रशंसा हेई थाए जेते प्रेज करा जाय थाए ऑटोमेटिकली से वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए लीडर। गणमाध्यम विभिन्न प्रकार पेपर मीडिया टेलीविजन अन्य मीडिया ये सब इनफॉरमेशन कलेक्शन करि थांती संवाद सरबराह जो गुडा को जाय सब तो से माने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कोड की बड़ी काम करूची रिपोर्ट कलेक्शन करी मीडिया रे पब्लिश करि थांती सो दैट द नेम एंड फेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम हाइलाइटेड and the volunteer organization become a leader volunteer organization in the society. So obviously je bhalo kama karibo nishchit bhavare he will leads the society or the peoples. Make adequate and positive projection of the conducted by the volunteer organization. Adequate positive environment must create. That means jete when there is that is the criticism or a negative environment will create, each volunteer organization must face it and ignore, reject all the negative thoughts or comments of the society. Only focus on the positive aspect of the society. समाज रे जे जेते कुच्छा रटना बा comment करू तथापि the voluntary members should come forward and to help the people during different time period or disaster period, during flood, earthquake and the अन्य जेतबे प्राकृतिक दुर्विपाक घटी थाए जेते जहा ले भी स्वच्छ निर्मल transparency and accountability must maintain in front of the society. स्वच्छ निर्मल एवं accountability कहले मु आगुर कहिछि तुमको लर्नर्स
तो मानु कहिछि that we should maintain 3 important accountability in our life. Anybody can maintain 3 accountability in his life for successful to reach the successful stage. One is time accountability, second is duty accountability, third is money accountability. So time accountability कौन जो समय रे हमको ड्यूटी रे जॉइन करिवार थिबो ठीक आमे सही समय रे आमे ड्यूटी जाई पहुंचीबा दरकार. So that is known as the time accountability. The allotted time must I follow. जो समय रे मते allotment करा जायछि मु काम करिया पय सही टाइम को फॉलो करिवा दरकार. So duty accountability means the assignment of the duty as given to me, so that I must perform cordially, tremendously and complete due time. Due time रे मते जो दायित्व संपादन करिवा पय दिया जायछि मु कंप्लीट करिवा दरकार. Suppose that Dr. D. Shahu has given me this class at 6 to 7 p.m. I must attend and take the classes of the MRDE-PG class at the allotted time. Jodi mu deviate kali, so one negative environment will create automatically. Our coordinator, respected coordinator Dr. Damodar Sahu has assigned it to me. By instructing to the regional director of Bhubaneswar. So centralized, the online class are going on. So that at the allotted time, I must present in online and complete the class for 1 hour. So that is known as my time accountability and the duty accountability. Another, money accountability. As what I credited the amount, I must refund due time. Bank ru ame suppose loan anle, ame due time re taku refund kariba darkar. So 3 accountability, you should maintain it, all learners. I instructed you through this counseling method. So you will create one positive environment in your surrounding. Your name and fame will spread. So I remain here. Good night to all learners. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. I marked a full stop here in my counseling part today. Thank you, sir. So move out tomorrow maybe. Hello. Listen to all learners. Listen me. Yes, sir. Yes, sir. So I only remain for 3 classes. Mo 3 class ne bhi tomorrow. Okay, sir. Tinta pare more complete hai jibo. Ta pare you ready. And you will hold counseling by Dr. D. Shahu. More 3 complete hela pare. Okay, sir. Ta pare tinta now 4 bodhe achi 4. How 4 class remain. Yes, sir. There are 4 classes for me. Then Dr. D. Shahu will continue your counseling. Okay, sir. Okay, sir. So I marked a full stop in my counseling part today. Okay, thank you, Tomorrow sir. you will join. Sir. I remain here. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you to all members. Asanta kali. हाँ आसंता काली क्लास हबो काउंसलिंग हबो आसंता काली